Good morning, students. We start with today's lecture with process life cycle. Now, what is a process? We have discussed in the last lectures. Process is a program under execution. Now, when a process executes, it passes through different states. We know that is, these stages may differ in different operating system, and the names of these states are also not standardized. In different authors with different books, you will find different names of these states. Overall, their functionality is the same. Each process may be in one of the following states. Now it says, you can see this diagram on your screen, which says there are basically 5 stages in any process. First is the new state, where the process is being created. The sooner the process is created, a new thread, or let's say a new process, is said to be born. Next is the ready state. Ready state may the process is waiting to be assigned a processor. That is, when the job is into the ready queue, it is known as to be a ready state of the process. Process which is still not executing. ओके जो रेसर की रनिंग में एक पोजीशन होती है ना कि गेट सेट गो वाली, दैट पोजीशन. Now third is the running state. Running state when the like athlete is actually running or a dancer is actually performing its art on the stage. So that is a running state. That is a process when it is assigned, it has been assigned a CPU time, that is a processor time, and it is under execution. That is known as a running state of a process. Fourth is the waiting state. The process is waiting for some event to occur. Now, this waiting state could be because of any reason. When a process is running, process can move from running to a waiting state. In a diagram you can see, because of any input output or for any event. कोई priority high priority process बीच में आ गया तो lower priority को waiting state में जाना पड़ेगा. सिग्नल पे जब हम मूव करते हैं, कोई वीआईपी मूवमेंट होता है, लाल नीली बत्ती की गाड़ी निकलती है, तो क्या होता है, जनरल ट्रैफिक को क्या होता है, रोक दिया जाता है ना, बिकॉज हाई प्रायोरिटी पीपल नीड टू मूव अक्रॉस, या एम्बुलेंस इज मूविंग, सो द ट्रैफिक फॉर द टाइम बीइंग इज हॉल्टेड. ओके, सो दैट इज द वे. तो रनिंग स्टेट में अगर एक प्रोसेस है, उस बीच में कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाएगा, तो फिर करंट प्रोसेस को वेटिंग स्टेट में डाल दिया जाएगा. या दूसरा रीज़न होता है कि जो रनिंग प्रोसेस है उसको एट अ मोमेंट कुछ इनपुट चाहिए, या मीनवाइल उसको कोई आउटपुट डिस्प्ले करना है, तो उसको सीपीयू टाइम नहीं चाहिए, उसको इनपुट आउटपुट एक्सेस टाइम चाहिए डिवाइसेस का. सो इन दैट केस ऑल्सो द प्रोसेस मूव्स फ्रॉम द रनिंग स्टेट टू द वेटिंग स्टेट. लास्ट इज द टर्मिनेटेड स्टेट. टर्मिनेटेड स्टेट क्या होती है, जब मेरा पूरा काम कंप्लीट हो जाता है, जिस लिए मैंने प्रोग्राम लिखा है, जो मेरे प्रोग्राम का एक्चुअली जो टास्क है, जो ऑब्जेक्टिव है, वंस माई ऑब्जेक्टिव इज फुलफिल, देन दैट प्रोसेस इज गोइंग टू रीच टू इट्स टर्मिनेटेड स्टेट. तो वी से दैट न्यू एंड टर्मिनेटेड स्टेट लाइफ साइकिल में सिर्फ एक बार अटेंड होती हैं, जबकि रेडी, रनिंग एंड वेटिंग स्टेट यू कैन सी इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस. बार बार प्रोसेस रेडी टू रनिंग टू वेटिंग टू रेडी टू रनिंग टू वेटिंग मूव ऑन करता रहता है. थिंग टू बी नोटेड ओवर हियर इस डायग्राम में, अगर फ्लो चार्ट की तरह आप देखें तो कोई भी प्रोसेस रनिंग से जब वेटिंग में जाता है, तो वेटिंग से देयर इज़ नो डायरेक्ट कनेक्शन टू रनिंग. ओके, अगर कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में पहुंच गया है, तो वापस से रनिंग स्टेट में आने के लिए उसको रेडी स्टेट के थ्रू गुजरना पड़ेगा, डायरेक्टली वो नहीं आ सकता. Okay, this point has to be remembered. Okay, now this was a short description about the life cycle of a process. We'll go on to the elaborate explanation of it by saying, when a new process is initiated, it is said to be in the new state, which means that the process is under creation. जब मेरा प्रोग्राम पहली बार एग्जीक्यूट होता है, जब हम फाइल को ओपन करते हैं, okay, or program is being fetched from the hard disk to the RAM, at that very moment we say that the process is born or it is being initiated, a memory is assigned. तो उस वक्त a new process is said to be born, जैसे ही RAM में memory allocate होती है. When the process is ready for execution, the long term scheduler transfer it from the new state to the ready state. जब तक प्रोसेस लाइक रैम पर रहता है, वो जॉब क्यू होती है. जॉब क्यू से रेडी क्यू में लाने का काम कौन करता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर.
जॉब क्यू से रेडी क्यू में आने का मतलब है कि व्हेन द प्रोसेस इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द न्यू स्टेट टू द रेडी स्टेट. तो न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में लाने का काम कौन कर रहा है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स. There are three types of schedulers, let me tell you. One is the long term scheduler, one is the medium term scheduler, and the third one is the short term scheduler. We'll learn about it at a later stages. Now next is the process is now entered into the memory of the system, we say. In the ready state, the processes are scheduled by short term schedulers. Ready state से running state में जाने के लिए we have short term schedulers. And a queue is maintained in which processes are serially sent to the processor. After maintaining the queue, the dispatcher then transfers the processes to the running state one by one as per queue sequence. फिर ready state से processes move on करते हैं into the running state. While being in the running state, the process utilizes the processor. But if there is a requirement of any input-output devices, as I said, in between the processing, then the process is shifted to the waiting state. फिर वो waiting state में आ जाता है. When the process is done with the input-output services, then instead of directly, I said that going back to the running state, it is again sent to the ready state. मैंने बोला था कि जब एक प्रोसेस रनिंग से वेटिंग में आता है तो वेटिंग से डायरेक्टली रनिंग में कभी नहीं जाता. It has to go to the ready queue, ready state, and then only it is moved on to the like running state, and then is scheduled again for going into the running state. This point is very important to be remembered, both from the theory point of view as well as practical viva point of view. This process keeps continuing, and when the process completes its execution, it goes into the termination state, that is which it exists from the main memory of the system, that is memory is deallocated. जो मेमोरी प्रोसेस को क्रिएशन के वक्त असाइन की गई थी वो विड्रॉ कर ली जाती है, ओके, डीएलोकेट कर ली जाती है. दैट स्टेज इज नोन एज द टर्मिनेटेड स्टेट ऑफ द process. Okay, next, the arrow in the diagram which goes from the running to waiting state, okay, exists only if the operating system follows preemption of processes. That is, a preemption क्या होता है? मैंने अभी आपको बोला ना example, when a high priority process comes in between the execution of a low priority process, the lower priority process has to be preempted. Now when this term preempt is used, preempt का मतलब होता है pre-ending, okay. So that is, a current running process can be interrupted in between and can be replaced by some other process with high priority. If the operating system does not allow preemption, then this switching is not allowed. तो कहने का मतलब है ये preemptive non-preemptive scheduling जो होती है, this is always present in multi-programming operating system that support multi-programming. ओके, सिंगल टास्किंग सिंगल प्रोग्रामिंग सिस्टम में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है प्रीम्पशन का. सो आई होप आई एम क्लियर विद द टॉपिक ऑन दिस लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोसेस या प्रोसेस स्टेट्स. दिस इज ऑफनली टर्म्ड एज प्रोसेस लाइफ साइकिल और डिफरेंट स्टेट्स ऑफ अ प्रोसेस थ्रू विच अ गिवन प्रोसेस पासेस थ्रू. नेक्स्ट इज प्रोसेस शेड्यूलिंग. The process scheduling is the activity of the process manager that handles the removal of the running process from CPU and selection of another process on the basis of particular strategy. कौन सा process कैसे schedule होगा, किसको कब number आएगा queue में आगे जाने का, this procedure, this activity is known as process scheduling. Process scheduling is an essential part of multi-programming operating system. Such operating system allow more than one process to be loaded into the executable memory at a time, and the loaded process shares CPU using multiplexing. As I said, multi-programming का ही काम में possible है कि आप multiple processes को concurrently एक साथ at a single moment of time execute करा सकते हो बारी बारी से. Okay, this is not possible in case of single programming operating system. Now by this topic I'll wind up my session, my video for today. I hope things are clear to you. We'll continue from process scheduling in our next live lecture that we are going to have. Okay. For any queries you may talk to us or discuss in the live class schedule for the next lecture. Thank you.